इस शुभ मौके पर सियाजुली टी गार्डन के मैनेजर जी ने हम लोग का तिरंगा झंडा बड़े 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ যিখন সংবিধান এই সংবিধানখন বলবৎ হৈছিল। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। अनि आज रिपब्लिक डे हो साथीहो। तपाईहरुलाई थाहा नै छ रिपब्लिक डे किन मनाइन्छ हामीले। सो आज हामी यहाँ सियाजुली टी गार्डन फ्याक्ट्रीको फिल्डमा प्लेग्राउन्डमा आएको छौँ। हामी रिपब्लिक डे मनाउनु साथीहो। त तपाईहरु मेरो भिडियोमा बनिरहनु, यहाँ कसरी के गरी मनाउँछन् तपाईहरुलाई सब देखाउने छु। सो मेरो भाइ र म आएको छौँ। अहिले हामी छौँ हाम्रो एमके टी गार्डन को फैक्ट्री को जस्ट अगाडि। सो चलो, अभी मैं आ चुका हूं हम लोग के सियाजुली टी गार्डन के प्लेग्राउंड में। और दोस्तों, जैसे हर साल होता है, इस साल भी यहां आज पटाखा उद्घाटन होगा। क्योंकि दोस्तों, आज का दिन है 26 जनवरी। पूरा भारत आज तिरंगा के रंग में रंग गया है। और दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, 26 तारीख, 26 दिन, 2026 साल, मतलब दोस्तों, आज का दिन सच में बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों, आज यहाँ असम टी गार्डन के परिचालक समिति संपादक लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के तरफ से अगरबत्ती जला के पूजा की गई, देश के लिए, शांति के लिए और सबके भले के लिए। और दोस्तों, इस शुभ मौके पर सियाजुली टी गार्डन के मैनेजर जी ने हम लोग का तिरंगा झंडा बड़े ही सम्मान के साथ झंडारोहण किया। दोस्तों, ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारे वीरों के बलिदान की निशानी है। जब तिरंगा लहराता है ना दोस्तों, तो दिल खुद ही जय हिंद बोल देता है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा काबिला उच्चल गंगा, गंगा हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चलित गंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। উদযাপন স্থলীত উপস্থিত থকা অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকল, অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকল, মোৰ সহকৰ্মী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু চিয়াজুলিবাসী ৰাইজ, আজি আমি সকলো ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ আমাৰ গণৰাজ্য দিৱস একেলগে উদযাপন কৰিবলৈ। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ যিখন সংবিধান এই সংবিধানখন বলবৎ হৈছিলে। 1946 চনৰ 29 আগষ্টত এখন সংবিধান সভা গঠন হৈছিল। আৰু এই সংবিধান সভাখনৰ গঠন হোৱাৰ পিছতেই আকৌ এখন খচৰা কমিটি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। এই খচৰা কমিটি ডক্টৰ বি.আৰ. আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 3 বছৰ কাল তেওঁলোকৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত তেওঁলোকে সংবিধানখন লিখি উলিয়ায়। আৰু এই সংবিধানখনত সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে চহী কৰিছিল। আৰু এই খচৰাখন 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী দিনটোত সংবিধান সভাই গৃহীত কৰিছিল। আৰু সেই দিনটো ধৰি আমাৰ এই সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হৈ আছে। তো মই আমাৰ সকলোকে জনাওঁ যে আমি এই সংবিধানখনৰ দ্বাৰা কেইটামান মৌলিক কৰ্তব্য আৰু মৌলিক অধিকাৰ পাওঁ। সেই মৌলিক অধিকাৰবোৰ উপভোগ কৰাৰ লগতে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম, যিবোৰ আমাক মৌলিক কৰ্তব্য দিছে সেইবোৰ আমি সুনাগৰিকৰ দৰে আমি কৰ্তব্যবোৰ পালন কৰিব লাগে। আৰু সকলোৱে যাতে দেশৰ অগ্ৰগতিত আজি আগবাঢ়ি যোৱাত অৱদান আগবঢ়ায়, ইমানকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম। ধন্যবাদ দিছোঁ আমাক সুন্দৰকৈ গণৰাজ্য দিৱস সম্পৰ্কত যি আমাৰ দৰে ছাৰে বুজাই দিলে, তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। নমস্কাৰ, মই চিয়াজুলি চাহ বাগিচা
লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবাসীক ৭৮তম গণতন্ত্ৰ দিৱস তাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আসাম ফ'কাছত 2027 আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোক दोस्तों इतना ही नहीं, आज हम लोग ने मिठाई भी खाई। रिपब्लिक डे की मिठास ही कुछ और होती है। साथ ही दोस्तों शिव जी का दर्शन भी हो गया। तो समझ लो दोस्तों, देश का भी आशीर्वाद, भगवान का भी आशीर्वाद दोनों मिल गया। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक। आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।